सो हे गाइस, वेलकम बैक टू proximatech। आज मेरे पास है इन्फिनिक्स का फ़ोन, जो कस्टमर का कहना है कि उन्होंने रात को चार्जिंग पे लगाया था और सुबह डेड मिला। यानी कि रात को चार्जिंग लगाया था और सुबह ऑन नहीं हो रहा है। और उनका कहना था कि ये कभी कभी होता था और ऑन हो जाता था, बट इस बार बिल्कुल ही ऑफ हो चुका है। तो चार्जिंग लगा के जब मैंने चेक किया तो इसमें हमारा जो एम्पियर है वो 0.003 मिली एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, जो ना के बराबर है। और इसमें ये दिक्कत ज़्यादातर CPU ड्राई होने की वजह से आता है, CPU रैम ड्राई होने की वजह से आती है, क्योंकि इसका रैम और CPU दोनों अलग अलग हैं, यानी डबल डेकर हैं। तो इसको हमें रिवॉल्व करना होगा। तो इसको हम फटाफट खोल के इसका CPU और रैम दोनों को ही रिवॉल्व कर देते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं।
सो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और CPU रैम जो है वो रिवॉल्व हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये वही बोर्ड है, बोर्ड मैंने रिप्लेस नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए इन्फिनिक्स लोगो आ चुका है और ये हमारा ऑन हो चुका है। तो ये हमारा लॉक स्क्रीन पे आ चुका है। इमरजेंसी में मैं आपको दिखा देता हूँ, टच ओके है, यानी टच चल रहा है, टच में कोई दिक्कत नहीं, और रिंगर भी वर्क कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।